Two little dinky birds sitting on a wall. One named Peter, one named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. So, everyone, come back. Welcome back to our nursery class. Good morning, all of you. Say good morning to ma'am. Good morning. So, let's start our fresh day after our 2 days of holidays. Yes, हमारे अभी 2 days के holiday था. One was on Saturday and Sunday. So, we are back after Sunday. Yes, Sunday was our holiday. So I hope you all have enjoyed your holidays, right? So now this is some activity time, right? So let's start with our class now. Let's first check our circle schedule. Call our circle schedule. So let's call our circle schedule. So let's first check our date. Yes, we are right. So, what date is today? What date is today? Today is 5. Yes, today date is 5 July. Today date is 5 July. Yes, it's 5. Give me 5. 5. Yes, today is 5 July. Let's paste it on our board now. So, it's done now. Now, let's see our day. What day is today? So, let's check what day is today. We are coming back after Sunday. So, today is Monday. Today day is Monday. Very good. So, let's paste it on our board now. Now, see that what we are going to do. आज हम क्या करने वाले हैं? Good question, everyone. So let's see. हम आज क्या करने वाले हैं? Oh wow! There is something new for you. आज एक new letter आने वाला है हमारी क्लास में. You wanna see? कौन आने वाला है? Letter I. Letter I. Yes, today will wanna come. Letter I. आज हम करने वाले हैं हमारा letter I. Yes, today we are going to do letter I. So everyone, call letter I. You wanna meet letter I? Call everyone. Letter I. Here I am. Here is our letter I. Which letter is this? Letter I. In our last class, we have discussed letter L. Which letter? L. L for lion. Now, we will do our next letter. Yes, there are so many letters. So, today we will discuss about letter I. You want to see how Mr. I looks like? See. Standing line, stop. One sleeping line, go down. One sleeping line. Again, look at very carefully. Put your finger here. Standing line, stop. On the top. Sleeping line, stop. Go down. Sleeping line. This is our letter I. I sounds E. I sounds E. Like big E. E. I sounds E. I for, you wanna see I for? I for yum yum. Ice cream. I for ice cream. I for ice cream. I for ice भी होता है. I for igloo. I for igloo. I for igloo. And I for
Independence Day. Yes, Independence Day भी आने वाला है. So I for Independence Day. Yes. So now students, look, there are also some other words which starts from letter I. So you want to see? So let's come with now. So let's start with our letter I. Which letter is this? Which letter is this? This is letter I. How the letter I looks like? How we make the letter I? Standing line, stop, go up, sleeping line, sleeping line. Again see, standing line, sleeping line, go down, sleeping line. I sounds E. I sounds E. I for ice cream. I for ice cream. I for ice cream. I for iron. I for iron. I for iron. I for ink pot. I for ink pot. I for ink pot. I for igloo. आपको पता है इग्लू कहाँ पे होता है? जहाँ पे बहुत सारी बर्फ होती है वहाँ पे इग्लू मिलता है. I for igloo. इग्लू के अंदर लोग रहते हैं जिससे कि वो अपने आप को ठंड से बचा सके. I for igloo. I for ice. हम आइस खाते हैं ना, आइस पानी में डालते हैं जिससे हमारी कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाती है. I for ice. I for ice. I for India. आपको पता है हम कहाँ रहते हैं? मैम ने आपको बताया था अर्थ होता है. अर्थ डे पे हमने अर्थ डे बनाया था, याद है आपको? वैसे ही हम अर्थ पे इंडिया होता है. हमारी कंट्री का नाम है इंडिया. हम इंडिया में रहते हैं. ओके, तो I for India. I for India. I for insects. I for insects. Insects पता है आपको कौन से होते हैं? इंसेक्ट्स मतलब जितने भी हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, हमने अपने घर पे देखा होगा. चींटी, चीटा, बटरफ्लाई, मधुमक्खी, हनी बी बोलते हैं, लेडी बग, राइट? तो ये सब क्या होते हैं? इंसेक्ट्स. I for insects. I for insects. Now there is one activity for you. Here you have to circle the letter I. You have to circle the letter I. So हम अच्छे से देखेंगे कि letter I कहाँ पर है. ओके, तो हमें इन 3 लेटर्स को देखना है और हमें बताना है हमारा लेटर I कहाँ पे है. ओके, सो लेट्स सी वेयर इज लेटर I. क्या ये हमारा लेटर I है? क्या दिस इज आवर लेटर I? नो. इज दिस इज आवर लेटर I? नो. Here is our letter I. So we will circle the letter I. Very good. So students, now we will see one worksheet also. So now take out your worksheets and let's come with ma'am. Okay? Hey everyone, so let's start with our worksheet now. This is the worksheet of letter. Which letter is this? Letter L. L for L. Lion. L. Lamb. Very good.
Now you can see that there are 3 dots here, okay? And मैम ने आपको बताया था कि हमको सबसे ऊपर वाला जो रेड कलर का लाइन है उससे स्टार्ट करना है और ये सेकंड वाला लाइन में लिखना होता है, ओके? वी डोंट हैव टू टच दिस लाइन, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टैंडिंग लाइन. स्टॉप. Drag your pencil. Sleeping line. Standing line. Stop. Sleeping line. Standing line. Stop. Sleeping line. Again. Standing line. Sleeping line. Standing line. Sleeping line. Standing line. Sleeping line. Standing line. Sleeping line. Standing line. Stop. Sleeping line. Standing line. Sleeping line. 2 lines more. Standing line. Sleeping line. Standing line. Sleeping line. Standing line. Sleeping line. L. Letter L. L for lion. L for lamb. Very good. So now students, there is one more activity for you. You wanna see? Okay, so let's see another letter. Yes, we have done today in today's class we discussed letter I. So now there is one activity for you. Okay, so let's start with that activity now. Students, you have to see that how the letter I forms. Letter I कैसा बनता है, okay? So मैम ने आपको बताया standing line होता है, then at the top ऊपर sleeping line, then go down sleeping line, right? So there are some sticks, okay? So हमें इन sticks को जैसे जैसे मैम ने बताया पहले एक standing line, then ऊपर sleeping line, then go down again sleeping line. इससे हमारा letter I बन जाएगा और हमें इस पर पेस्ट करना है, ओके? सो फर्स्ट वी हैव टू टेक फेविकॉल एंड फेविकॉल लेके हमें यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे पहले. तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन, ओके? क्योंकि हमें स्टैंडिंग लाइन में लगाना है. तो कैसे होता है स्टैंडिंग लाइन? लाइक दिस, राइट? सो वी विल पेस्ट इट लाइक दिस, स्टैंडिंग लाइन. अब हमें कौन सा लाइन बनाना है? स्लीपिंग लाइन एट द टॉप. So we will take our next stick. Very good. Now next, again go down. अब नीचे बनाएंगे, हम इसे पेस्ट कर देंगे स्लीपिंग लाइन. सो हमने 3 लाइन्स की हेल्प से क्या कौन सा लेटर बनता है हमारा 3 लाइन्स की हेल्प से? इस तरीके से लेटर आई. आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इग्लू. सो अभी हम दूसरा लेटर पे भी करेंगे ऐसे ही सेम. फर्स्ट वी विल पेस्ट स्टैंडिंग लाइन, ओके? ऐसे ही फिर हम पेंसिल से भी प्रैक्टिस करेंगे. सो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, अब हम स्लीपिंग लाइन एट द टॉप, स्लीपिंग लाइन. नाउ नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन. वेरी गुड. ये हमारा क्या बन गया? लेटर आई. लेटर आई. आई फॉर ice cream, I for igloo, I for ink. Very good. Now you can see that there is one more worksheet here. Here you have to trace letter I. Okay, so हम अच्छे से देखेंगे कैसे हमें ट्रेस करना है.
standing line, sleeping line, sleeping line. I for ice cream. Standing line, sleeping line, sleeping line. Letter I. Standing line, sleeping line, sleeping line. Letter I. Again, standing line, sleeping line, sleeping line. Letter I. Again, see it very carefully. Standing line. Join the dots. Join the dots. I for ice cream. I sounds E. I sounds E. Standing line, sleeping line, sleeping line. Standing line, sleeping line, sleeping line. Standing line, sleeping line, sleeping line. Standing line. Join the dots. Join the dots. Sleeping line. Standing line, sleeping line, sleeping line. हमें लास्ट लाइन को टच नहीं करना है. ओके. Standing line, sleeping line, sleeping line. Very good. So students, you all have to practice these worksheets at home and send your homework to mom. Okay. Till then, take care. Bye bye.